What are latitudes? Latitudes are imaginary horizontal lines drawn on Earth from east to west. They measure the distance of a place north or south of the equator. The equator divides the Earth into two equal halves, that is, first northern hemisphere, second southern hemisphere. You see here is a picture of Earth. In this middle an imaginary line, its name is in middle an imaginary line, its name is equator. Okay, and latitude is the line which is horizontal to the equator and it's drawn from east to west. Okay, and the upper part of the equator is northern hemisphere and the lower part of the equator is southern hemisphere. Features of latitude. Latitude measured in degree. Range starts from 0 degree to 90 degree and parallel to each other. Okay, in this picture you also see here, this is equator. Equator, what is equator? Equator is an imaginary line which divides Earth into two equal halves, and the portion upper portion of the equator is northern hemisphere and lower portion is southern hemisphere. Latitude is measured in degree. Okay, we all know angles is measured in degree, and here in latitude range is started from 0 from equator 0 1 2 3 up to 90 degree of the poles, both poles, north poles and south poles. ओके, लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ ड्रॉ किया रहता है. ठीक है, वो क्या मेजर करता है? डिस्टेंस को नॉर्थ और साउथ, इक्वेटर के नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट में अर्थ के डिस्टेंस को मेजर करता है. ठीक है, वो क्या ये जो बीच का एक इमेजिनरी लाइन होता है उसको बोलते हैं इक्वेटर. इक्वेटर के ऊपर जो वाला पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और नीचे वाला पार्ट जो है वो साउदर्न हेमिस्फेयर है. लैटिट्यूड का फीचर्स क्या होता है? तो लैटिट्यूड जो है उसका मेजरमेंट डिग्री में होता है और इसका जो रेंज होता है वो इक्वेटर से शुरू होता है 0 से, और जैसे जैसे ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो 90 डिग्री होगा, और नीचे जो पोर्शन है साउदर्न हेमिस्फीयर है तो 0 से स्टार्ट होकर जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल तक जाते जाते 90 डिग्री हो जाता है. ठीक है, जितने भी लैटिट्यूड है वो आपस में पैरेलल हो. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड. First, we have to discuss equator. Equator is longest latitude. It receives sunlight directly and it divides Earth into two hemispheres, that is southern and northern hemisphere. Okay. Then we have to discuss Tropic of Cancer. Tropic of Cancer is present on 23.5 degree north. It receives sun overhead on 21st June. After that, we have to discuss Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn is 23.5 degrees south. It is present in southern hemisphere and sun is overheaded here on 22 December. Next, Arctic Circle. Arctic Circle is present in 66.5 degree north. Experiences long days in summer. Next, Antarctic Circle, it presents 66 half degree south, experiences long nights in winter. इसको इस तरीके से, if you have to learn that in which Tropic of Cancer sun is overhead in on which date, we have learned it like 21 NL, मतलब 21 जून को longest होता है वो दिन जो है पड़ता हो, जो सन ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है, उसमें हम लोगों को पढ़ना है 5.5 कोर इमेजिनरी लाइंस को मेनली. पहला इक्वेटर, ठीक है, जो मिडिल में होता है. दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री पे होता है. उसके बाद टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को पढ़ना है जो साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है 23.5 डिग्री पे. उसके बाद आर्कटिक सर्कल जो है 66.5 नॉर्दर्न में होता है, एंड एंटार्क्टिक सर्कल जो है 66.5 एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है. मतलब जो है
आपको भी पता है कि लैटिट्यूड में इक्वेटर से शुरू होता है और इक्वेटर 0 डिग्री से नॉर्थ और नॉर्दर्न पोल तक जाता है 90 डिग्री, और 0 से साउदर्न नीचे की तरफ साउथ पोल तक जाता है 90 डिग्री। तो इक्वेटर से जैसे ही ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर जो 23.5 पे गए हैं, तो वहाँ पे जो लाइन होगा वो क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद फिर ऊपर बढ़ेंगे थोड़ा सा 66.5 डिग्री पे जो मिलेगा इमेजिनरी लाइन, उसको क्या बोलेंगे, आर्कटिक सर्कल। ठीक है, उसी तरीके से इक्वेटर से नीचे आएंगे, तो जब 23.5 साउथ पे आएंगे तो क्या मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर थोड़ा सा और नीचे जाएंगे 66 डिग्री पे, तो क्या मिलेगा हमको, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। ओके, देन now we have to discuss zones of Earth. Here we have to discuss three types of zone: torrid zone, temperate zone, and frigid zone. Okay, torrid zone, the region between 0 degree to 23.5 north and southern hemisphere is torrid zone, and in this zone, very hot region receives direct sunlight. Okay. Second, temperate zone. Temperate zone is between 23 half to 66 half degree. It is moderate climate, neither too hot or not too cold. Next zone is frigid zone. In this zone, the 66 half degree to 90 degree, it is extremely cold and receives slanting sunlight. यहाँ लाइट बहुत धीमे बहुत कम पहुंचता है, ठीक है, सनलाइट बहुत कम पहुंचता है। तो क्या होता है, अर्थ के जोन को हम लोग आज अभी पढ़ रहे हैं। अर्थ का जोन जो है वो तीन तीन पार्ट में बटा हुआ है। जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर से नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दो बीच का जो जोन होता है उसको जो हम लोग बोलते हैं टोरिड जोन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद का जो एरिया है 23 हाफ टू 2066 हाफ डिग्री तक, नॉर्दर्न साउदर्न दोनों हेमिस्फीयर में, वो टेम्परेट जोन होता है। ठीक है, वहां पे सनलाइट जो है थोड़ा थोड़ा पहुंच पाता है। उसके बाद जो है फ्रिज जोन है, जहाँ पे बहुत एक्सट्रीमली सनलाइट पहुंचता है, तो वहां पे थोड़ा सा ठंड ज्यादा रहती है, तो उसको फ्रिज जोन बोलते हैं। Now we are going to discuss longitude. Longitudes are imaginary vertical lines drawn from north pole to south pole. Okay, they measure distance east or west of the prime meridian. Prime meridian, it is 0 degree longitude, passes through Greenwich, divides earth into two hemisphere, that is eastern and western hemisphere. Okay, latitude divides earth into two parts, northern and southern hemisphere, and longitude divide it into two parts, eastern and western hemisphere. Okay, features of longitude: longitude measures from 0 to 180 degree east and west. All longitudes are equal in length. Okay, all longitudes are equal in length. Also called meridian, it is also called meridian of longitude because okay, it is also called meridian of longitude. Then what is the importance of longitude? Longitudes helps in determining time, locating places, and navigation used by the sailors and pilots. Okay. Now we are going to discuss time zone. Okay. We all know Earth rotates from west to east. Okay. Because of this, different places experiences day and night at different times. So we cannot have the same time everywhere. Okay. Earth rotation and time. You all know Earth takes 24 hours to complete one rotation. There are 360 degree of latitude. So we have to divide it 360 degree by 24. We know 15 degree per hour. This means every 15 longitude 1 hour difference. Okay. We all know Earth rotates from west to east. Because of this, we experience day and night at different times. So we cannot have the same time everywhere. How we calculate it? We all know Earth takes 24 hours to complete one rotation. There are 360 degree of lat longitude. We divide 360 degree by 24 hours, we get 15 degree per hour. This means every 15 degree longitudes have 1 hour difference. Okay. Now, local time. Local time is the time at a particular place based on the position of the sun. For example, when the sun is the highest in the sky, noon is 12 p.m.
but local time varies from place to place. In this picture, you also see latitude and longitude here. Okay. Now, standard time. Okay, to avoid confusion, countries use a fixed time called standard time. It is based on a particular longitude chosen for the whole country. Okay, स्टैंडर्ड टाइम जो कोई कंफ्यूजन ना हो इसीलिए एक स्टैंडर्ड टाइम एक कंट्री अपना बनाता है जिसको सारे कंट्री के सारे स्टेट्स को फॉलो करने होते हैं. After that, we have to discuss Indian Standard Time. It is based on 82° half east longitude, passes near Mirzapur. Okay, Indian Standard Time is equal to GMT, Greenwich Meridian Time, plus 5 hours 30 minutes. Greenwich mean time क्या होता है? Based on prime meridian, that is 0°, also called universal time. एक universal time है. Okay, it is the reference point for calculating the time worldwide. Worldwide का time के reference के लिए ही Greenwich mean time use किया जाता है. Time zones of the world, how we calculate it, we all discussed it. The earth is divided into 24 times zones. Each zone is equal to 50° longitude. Each zone differs by 1 hour. For example, India is ahead of GMT by 5 hours 30 minutes. The USA has multiple time zones. How will we calculate Greenwich time here? For example, you see here 12 noon at Greenwich. So what time in India? We discussed how we calculate we have discussed Indian Standard Time. So then we calculate it. We add the time at a GMT. We add 5 hours and 30 minutes in it. Okay. So 12 plus 5:30 equal to 5:30 p.m. Okay, so it is so easy to calculate. Now we are going to discuss international date line. It located near 180° longitude, opposite of prime meridian. Here is some rule for crossing. If we cross from west to east, a day decreases, and when we cross from east to west, a day increases. And then what is the importance of international date line? It helps to maintain correct date worldwide. Second, prevent confusion in global trade, travel and communication. Now we are going to discuss importance of latitude and longitudes. First, locating places help finding exact position on Earth used in maps and GPS. Second, navigations used by ships and airplanes. Third, climate study. Latitudes affect climate and seasons. Fourth, time calculation. Longitude helps determine time. Here is a picture of latitude and longitude, which is both featured in the same frame. So first divide it. Okay. Thank you for watching. In next class, we are going to discuss the next chapter of your book. Thank you.